Good evening, children. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening. You can hear me? Everyone can hear me? You can unmute yourself. All of you can unmute yourself and tell me. Yes, sir. Okay. Good, good, good. Very good. All of you can see me properly? Yes, sir. Good, good. So, today it is the last session of this particular program, but all of you know my email ID, all of you know my mobile number. Whenever you have any trouble, any problem, you can always get back to me related to career, courses, studies, a little bit of counseling, or any kind of academic guidance. You can always get back to me. All right. I think till now, very few people have joined. So no problem. We'll just wait for some time. You can switch on your camera. You can unmute yourself for some time. You can unmute yourself. You can switch on your camera. You can always keep your camera switch on during the session. सेशन के दौरान कैमरा चालू रख सकते हैं. Okay, anyone has any questions or any doubts, you can ask me. No, sir. Okay, okay, fine. I think we should just start. Okay, okay. More people are joining. You see, this is another thing that I've always been very focused about: continuity, perseverance. A lot of people start a lot of things, but during the process, either they lose interest or they change their goals. Yeah, I'll do that, Shubham. Don't worry. I'm just saying that, on first day we had around 41 people, right? And today I can see around 16 right now. Yesterday also there were very less. And this is the fact after payment. I'm not saying that whether taking payment is right or wrong, but I'm just saying that even if it is paid, half of the people did not attend yesterday's session or today also. I don't think, a lot of people are, I think a lot of people are going to miss it. So remember this one thing. If Evening, you sir. Hello. If you really wish to learn something in life, whether it is small, whether it is big, whether it is paid or free, make sure that you complete the process. If you do not complete the process, you will not be able to learn it properly. Surficial नॉलेज रहेगा, है ना? थोड़ा इधर से देख लिया, थोड़ा उधर से कर लिया, ऐसा रहेगा. So always remember that unless you complete the whole process, the learning will be incomplete, and फिर उसको इस्तेमाल करना बड़ा तकलीफदायक होगा. Okay, just remember that thing. Okay, चलो, so I'll share my screen and we shall start with the work. Okay, now just give me a moment. I'll do the. You can see the screen. All of you can see the screen. You can reply in chat box now. You can reply Yes, sir. in the chat box. Yes, Anusmita, I'll start with that only. Anusmita, as you can see on the screen, we will start with that only. Perfect. So cubes of numbers beginning with 1. So if I have, let's revise a bit of yesterday's work, then we shall move ahead. Okay? We shall revise a little bit of yesterday's work, then we shall move ahead. Let's see. If I have to find the cube of 14, so how do we take it? Listen very carefully. 1 will come alone, then 4 will come in the second part,
4 square will come here and 4 cube will come here. Listen again. 1 will be separated. Then 4 as it is, 4 square, 4 cube. Okay. Now how to write the answer? From this 64, 4 will come and 6 will be carried forward. Then these two items multiply by 3. 16 threes is 48. 6 carry forward. So 48 plus 6, 54. 54 का 4 इधर, 5 carry forward. Then 4 threes are 12, 12 and 15, 17. 17 का 7 here, 1 carry forward. Then 1 and this 1 carry forward, 2. So this is 2744. Let's try with 16 cube. Shubham, let's try with 16 cube. So first one and the last one as it is, same. Okay. And middle वाले दोनों में multiply by 3. So 1, 6 का 6, 6 square 36, 6 cube 216. How do I write the answer? 6 will come here, 21 will be carried forward. Then 36 into 3, that is 108. 108 plus 21, that is 129. So 9 here, 12 carry. Then 6 into 3, 18. 18 plus 12, 30. 0 here, 3 carry. Then this 1 and 3, 4096. All right. I hope everyone gets it now. Anusmita and Shubham, I would want your confirmation. Let's try a little more difficult one. 17 cube. Let's try to do 19 cube. Obviously, you should know the 7 cube and 9 cube. Yes, Irban. Very good, Ayush, Ankit. So 1, 7, 7 square is 49 and 7 cube is 343. The only thing you have to be careful that 7 is a single digit number. So from here in the answer you will take just 3. 34 carry forward. ये पूरा carry forward होगा. Then this into 3. 49 into 3 is 147. 147 plus 34. 147 plus 34 is 181. 181, you will get 1 here, 18 carry forward. And 7 into 3, 21 plus 18, 39. So 9 here, 3 carry forward. Then 1 plus 3, 4. 4913. Right? So carry forward बढ़ता जाएगा. Very good, dollar. Jagjit Singh, very nice. 19 cube. So 1, 9, 81, and 9 cube is 729. So we get 9 from here, 72 carry forward. Then 81 into 3. हाँ इरबान, जो मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ सुनो और उसको फॉलो करो. 81 into 3 is 243. 72 carry forward. So 243 plus 72. Add karo carefully. 3 plus 2, 5. And 31 carry forward. Right? Then 9 into 3. बीच वाले दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करना है. 27 and 31, that is 58. So 8 here, 5 carry.
First wala as it is. So 1 plus 5, that is 6. Right? So this way it will carry on like this. It will go on like this. So cubes of number beginning with 1. Right? ठीक है. Now let's take 3-digit number. Beginning with 1 3-digit number. So suppose if we have 103 cube. So now how will you do it? Separate 1 and separate 03. Now 03 का meaning क्या है? Value तो 3 ही है, but the meaning is we will take 2 digits. Right? So how do I write it? Let's see. 1. 3 is written as 03. 3 square is 09. 3 cube is 27. ठीक है? Right. Now first and last as it is. But here we'll take 2 digits. So पूरा 27 आएगा. बीच वाले दोनों में 3 से मल्टीप्लाई करना है. इरबान, बीच वाले दोनों में 3 से मल्टीप्लाई करना है. So 9 into 3 is 27. 3 into 3 9. So 27 पूरा 2 डिजिट लेना है. So पूरा का पूरा आ जाएगा. 09 पूरा का पूरा आ जाएगा. And 1 as it is. So there is no carry forward. Answer is 1092727. There is no carry forward. There is no carry forward. 106 cube. शुभम 106 cube. So अच्छा ये 0 लिखे या ना लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता. Whether you write this 0 or you write this 0 doesn't matter, है ना? You just have to make sure that you multiply by 3. And in the end, you take 2 digits from each place. So 106. So 1, 6, 36, 216. But how do I write the answer? How do I write the answer? From here, we'll get 16 and 2 carry forward. Do you understand that? We have to take 2 digits and remaining will be carry forward. Because we are taking 1 separate and 06 separate. Please mute yourself, everyone. 36 into 3 is 108. 108 plus 2 is 110. 110 में से क्या आएगा? 10 will appear here and 1 will be carry forward. Then 6 into 3, 18. 18 and 1 carry forward, 19. And then 1 alone. So 1191016. Finally, Shubham, 107 cube बताओ. 107 cube. So 1, 7, 49, 343. In the answer, 43 will come as it is. ये वाला 3 will be the carry forward. Then बीच वाले दोनों multiply by 3. 49 3s is 147. 147 plus 3 is 150. From 50 we will get 50 here and 1 carry forward. Then 7 into 3 is 21 plus 1, that is 22. And 1 ke liye 1. So 1225043. Right, Shubham? Let's take one more. Yeah, I'll just wait for 10 seconds, then I'll go to the next one. I'll go to the next one, then. Yeah. Chalo. Any question? Any question? ठीक है.
Let's take up 112 cube. थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए आई गिव यू 125 cube also. 112 cube and 125 cube. So obviously we should remember 12 cube. 12 cube is 1728 that we would have done in other case. And 25 cube is 15625 that I'm telling you now. So use these information and see what you can do. So ये वाला 1 अलग करेंगे, ये वाला 12 अलग होगा. So 1, 12, 144 and 1728. How do I write the answer? 1728 as it is. So 28 will come here. 17 will be carry forward. Then these two parts multiply by 3. So if you multiply by 3, 144 into 3 is 432. 432 plus 17, that is 449. So 49 will come here. 4 will be carry forward. 12 into 3 is 36. 36 plus 4 is 40. And this 1 as it is. So 1404928. Very good. Very nice. Very nice. 1404928. 125 cube. 125, 625, 15625. Now this one. 25 will come here. Now look at the carry forward. That is very large. 156 is the carry forward. Now these two multiply by 3. So 625 into 3 is 1875. And plus 156. 156 इसमें ऐड होगा. तो ऐड करो ध्यान से. 5 और 6 11, 13, 20. So 2031. Please look at this. 1875 and 156 carry forward. 2031, 31 will come here. 20 will be the carry forward. Again, this into 3, so 75. Now 75 plus 20 is 95. And 1. So 1953125 is the answer. ठीक है? So I think जितना करना चाहिए क्यूब में, that we have done quite a lot. Okay? Sure. Let's move on to the agenda of today's session. We'll do some new methods. I hope this is completed. Everyone, please confirm in the chat box. Or if there is any question, you can tell me now. After this, we'll take up the new things of today's session. There are 3-4 more methods. We'll do them today, and then we'll close the session. All right. Multiplication with nines. Let's start with a very simple situation. 7 into 9. How much is it? I'll tell you a very interesting method. Yes, Irban. One thing you know already, the table, right? I'll tell you another way to look at it. The answer will have 2 parts. Listen very carefully. Everyone, please listen very carefully. Answer will have 2 parts. The first part will be 1 less than this. Listen very carefully. The first part will be 1 less than this. That is 6. And the second part will be 9 minus 6. Always 9 minus 6. So 3. You can check it for any situation. 2 into 9. 1 less than 2, that is 1. And 9 minus 1 is 8. Do you see that? 4 into 9. 1 less than 4 is 3. And say 9 minus 3 is 6. Do you notice this?
So 9 तो आसान है. Let's look at 99. If I have 23 into 99, listen to me very, very carefully. 1 less than 23 is 22. And the second part, subtract each digit from 9. Subtract each digit from 9. So इसको भी 9 से subtract करो, इसको भी 9 से subtract करो. So 9 minus 2, 7. 9 minus 2, 7. So 2277. I'll repeat once more. Listen again. 38 into 99. How do I write the answer? 1 less than 38, that is 37. Then subtract 3 from 9, you will get 6. Subtract 7 from 9, you will get 2. So 3762. Let's take another example. 47 into 99. 1 less than 47, that is 46. Order का ध्यान रखना, order मत change कर देना. 9 minus 4, 5. 9 minus 6, 3. Everyone, please tell me if you understood this. We'll go one by one. We'll increase the difficulty level. We'll change the cases also. But first, focus on this part. Right now, we are taking same number of digits. Same number of digits मतलब एक 9 है तो एक digit. 2 9 है तो 2 digit. अभी हम वो ले रहे हैं. फिर एक एक करके cases change करेंगे. In this, anyone has any trouble, please tell me. It's a very interesting thing. Let's extend this. 253 into 999. 253 into 999. Less than, 1 less than this. इससे एक कम, that is the first part. And then subtract each digit from 9 in that order. So ये वाला पहले 9 minus 2 7, 9 minus 5 4, 9 minus 2 7. Please follow the order religiously. 358 into 999. So 3, 5, 7, 6 minus 3 is 3, 6 minus, 9 minus 3, 1 second. 9 minus 3 is 6, 9 minus 5, 4, 9 minus 7, 2. So 3, 5, 7, 6, 4, 2. मजा आ रहा है? 8, 6, 4, 7, 8 into 99999. अभी मैं सिर्फ वही केसेस ले रहा हूं जिसमें नंबर ऑफ नाइन्स एंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन दिस नंबर आर सेम. पहले ये केस कंप्लीट करें. So first, इससे एक कम, that is 8, 6, 4, 7, 7. Then 9 minus 8 is 1. 9 minus 6, 3. 9 minus 4, 5. 9 minus 7, 2, 2. This is the answer. Please be careful. Please be careful. यही था ना सिर्फ. Only this much. 8 क्यों आएगा? लास्ट में 8 क्यों आएगा? अवेस्ता अंकित एक एक्स्ट्रा ले लिया. Just this is the answer. Please focus. ये वाला first part, ये वाला second part. ठीक है. I hope everyone understand this, है ना? 8, 6, 5 multiply by 999. 865 multiply by 999.
सो इससे एक कम, दैट इज 864. Then 9 minus 8, 1, 9 minus 6, 3, 9 minus 4, 5. That's it. ठीक है? 997 into 999. So it is 996003. 889 into 999. 889. So 888 111. Right? Suppose we have 763 4 into 9999. Ab. So 7633 2366. Okay. Chalo. Now I'll give you different situations. 52 into 999. अगर डिजिट्स कम हो, 9 ज्यादा हो, डिजिट्स कम हो, तो क्या करोगे? We already know that. क्या करेंगे? Zero. Very good. We put a 0 and then solve. Very nice. So 051 051 and then ये पूरा subtract करना. So 9 minus 0 9, 9 minus 5 4, 9 minus 1 8. So 51948 is the answer. While finding the answer, 0 is important because तभी ये 9 आएगा, है ना? I hope everyone is clear about it. 387 into 9999. So how many nines are there? 1 2 3 4. So इधर 0 डाल दो. 4 हो गए. So 0386 into, sorry, not into, ये तो आंसर लिख रहे हैं. Then for 0 we will have 9, for 3 we will have 6, for 8 we will have 1, for 6 we will have 3. Answer is 3869613. दिमाग चला लेने का उन्होंने लिखने की जरूरत नहीं जब सब्ट्रैक्ट करें तो याद रखना कि 9 आ जाएगा उसे 9 minus 0. Please mute yourself. Okay, so I think this is clear to everyone, right? Let's take a couple of more examples. If I have 6894 into 99999, 6 बार 9, 6894 999 999. So what do? You put 2 zeros. 1 2 3 4 5 6. So 1 2 3 4 5 6, correct. So 0 0 6 8 9 3 and then 9 9 3 1 0 6 6 6 5 कैसे आएगा? 3 है ना? 5 कैसे आएगा भाई?
Subtract every digit from 9. Subtract every digit from 9. So 0 के लिए 9, 0 के लिए 9, 6 के लिए 3, 8 के लिए 1, 9 के लिए 0 and 3 के लिए 6. Okay. Suppose we have 382 multiplied by 9999999. 1 2 3 4 5 6 7. So 1 2 3. So put 4 zeros. So it will be 4 zeros, 381, then 9999618. So the final answer is 38199999618. Right, everyone? Now please tell me if there is any doubt. Put it in your comment box. Chat box में आप डालिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो. इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए. Then we'll go to the next. नहीं है, देखो चप्पल है. Jagjit Singh, please mute yourself. Otherwise, I'll mute you permanently. Please mute yourself. Jagjit Singh, please mute yourself. Yeah. All right. चलो, अब अगर हमारे पास ऐसा हो 347 into 99. अब क्या करेंगे? अब ध्यान से सुनना. अब ध्यान से सुनना. यहां पे एक एक्स्ट्रा स्टेप होगा. First, you see how many nines are there. Everyone, please listen to me. Don't do anything else. Please listen to me and see what I'm doing. How many nines are there? So 9 9. ठीक है. So अगर ये सिर्फ 4 7 होता तो क्या करते? पहले वो तो कर लो. I repeat, अगर ये सिर्फ 4 7 होता तो वो तो हमें पता है ना क्या करना है. Right? क्या होता वो? That would have been 4 6 और इधर 5 3. ऐसा हो जाता. इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं ना. Is everyone clear about this? तो ये जो एक्स्ट्रा 3 है इसका क्या करें? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है. ध्यान से सुनो. एक्स्ट्रा 3 का क्या करेंगे? बहुत ध्यान से सुनो. ये 3 यहां रख दो और ये 3 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो. फर्स्ट पार्ट में से, सिर्फ फर्स्ट पार्ट में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो. सो आंसर क्या बन जाएगा? 3 4 3 5 3. दोबारा से फिर से करता हूं. ध्यान से सुनना. जिन लोगों ने मिस किया फिर से सुनो. सर लास्ट में 5 2 आएगा. एवरीवन प्लीज पे अटेंशन. बिल्कुल ध्यान से. मैं फिर से शुरुआत से बता रहा हूं. अज्यूमिंग कि मैंने कुछ नहीं बताया उस हिसाब से बता रहा हूं. फिर से ध्यान से सुनिए. इफ इट इज ओनली 47 into 99 तो क्या होता? दिस वुड बी 4 6 and 4 9 minus 4 5 9 minus 6 3. ये होता ना. ठीक है. बट यहां पे 3 भी था. यहां पे 3 भी था ना. तो 3 होगा तो इधर भी 3 आएगा. एक्स्ट्रा काम क्या करना है वो समझो. -3 करना है. किसमें से? फर्स्ट पार्ट में से. सिर्फ फर्स्ट पार्ट में से. सेकेंड पार्ट को कुछ नहीं करना. सिर्फ फर्स्ट पार्ट में से 3 सब्ट्रैक्ट करना. जो है ना वो सब्ट्रैक्ट करना बस. सो इट इज 3 4 3 5 3. ठीक है.
एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, घबराने की बात नहीं है. इफ आई हैव 5 6 8 7 multiply by 9 9 9. वंस अगेन, फिर से ध्यान से देखो, फिर से पूरा कर रहा हूं मैं. हाउ मेनी नाइन्स आर देयर? 3 नाइन्स आर देयर. सो इफ देयर वर दीज 3 डिजिट्स, अगर ये सिर्फ 6 8 7 होता तो हमको पता है ना कैसे मल्टीप्लाई करना है. 6 8 6 एंड देन 9 minus 6 3, 9 minus 8 1, 9 minus 6 3. ये तो हो जाता. बट ये 5 का क्या करें? जहां था वहां रख दें और इसमें से सब्ट्रैक्ट करें. बस ध्यान क्या रखें, सिर्फ इसमें से फर्स्ट पार्ट में से सब्ट्रैक्ट करें. सेकंड पार्ट का काम तो हो गया पहले. So if you subtract 5, it is 5 6 8 1 3 1 3. Right? और एक बार बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से. Let's see. एक और एग्जांपल पूरे अच्छे से करके बताता हूं, घबराना नहीं. 8 7 6 4 multiply by 9 9 9. How many nines are there? 1 2 3. सो अगर यहां पे भी 3 ही होते, सिर्फ यही 3 होते, ये अगर 8 नहीं होता तो क्या करते? वो कर दो, जो करते वो कर दो. ठीक है ना? सो दिस वुड हैव बीन 763 एंड इधर हो जाता 9 minus 7. मैं कलर चेंज करके लिखता हूं. 9 minus 7 would have been 2, 9 minus 6 3 and 9 minus 3 6. ये होता. ठीक है, इसमें तो कोई डाउट होने की संभावना नहीं है. What about this 8? This 8 will come here and 8 will be subtracted. लेकिन किसमें से? सिर्फ फर्स्ट पार्ट में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा. ठीक है, 2 3 6 तो एज इट इज रहेगा एंड दिस विल बिकम 8 7 5 5 2 3 6. So this is our final answer. I hope this makes it very clear. प्रॉब्लम तब होगी जब ये और भी बड़ा नंबर होगा. लेट्स टेक दैट एग्जांपल आल्सो. सपोज वी हैव 3 8 5 4 7 2 मल्टीप्लाई बाय 9 9 9 9. चलो इसको सॉल्व करो. 3 8 5 4 7 2 9 9 9 9. So first you count how many nines are there. How many nines are there? 4 nines are there. So count 4 digits. 1 2 3 4. तो पहले इसका काम तो निपटाओ. This will become 5 4 7 1 4 5 2 8. इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए. Then 38 आ जाएगा इधर एंड 38 सब्ट्रैक्ट होगा. लेकिन ध्यान क्या रखना, इस सिर्फ इतने में से 38 सब्ट्रैक्ट होगा. इस ये कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड पार्ट को मत छेड़ देना. Am I right? So 4 5 2 8 will come as it is. इधर से 38 सब्ट्रैक्ट होगा. So 11 minus 8 that is 3. 6 minus 3 that is 3. 4 5 3. This is your answer. Is it clear, children? 3 8 5 4 3 3 4 5 2 8. So I hope this makes sense. हेलो सर. चलो अभी आप अनम्यूट करके बोल सकते हो. Yes, आप sir. बताओ, किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ है तो बताओ. नो सर. नो सर. ठीक. हेलो सर. यस, तो लास्ट वाले में 8 कैसे आया? सब्ट्रैक्ट करके 8 कैसे आया मतलब? ये 9 minus 1 कितना होता है? How much is 9 minus 1?
ये 4 कैसे आया, ये 5 कैसे आया, ये 2 कैसे आया, ये 4, ये 5, ये 2 कैसे आया, वैसे ही ये 8 आया। 9 minus 5 is 4, 9 minus 4 is 5, 9 minus 7 is 2, 9 minus 1 is 8. ठीक है? Suppose we take another example. 3, 6, 9, 8, 4, 5, 2, 1 into 9, 9, 9, 9, 9. चलो ध्यान से देखना, ध्यान से सॉल्व करना. I'll just be back in a minute, just 1 minute. Yeah, I'm back. Yes. So first you count how many 9s are there. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. That means 369 अलग हो जाएगा. पहले इसका काम, that is 8, 4, 5, 2, 0. Now please don't disturb. Can you see the screen? No, sir. Can you see the screen now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, all right. Yeah. So 8, 4, 8, 4, 5, 2, 0. ये आ जाएगा. 8, 4, 5, 2, 0. Then 9 minus 8, 1. 9 minus 8, 1. 9 minus 4, 5. 9 minus 5, 4. 9 minus 2, 7. And 9 minus 0, 9. ये first part हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, ये first part हुआ. What is this? 369. So 369 subtract करो. So if you subtract 369 from this, ये 15479 will come as it is. इसमें कोई change नहीं करना. Okay. And this 369 subtracts, so 10 minus 9, 1, 11 minus 6, 5. Okay, 4 minus 3, 1, 8, 4. So this is the answer. So obviously the difficulty level will be more accordingly, है ना? चलो, let's take one more example. Oh,
ठीक है, कोई बात नहीं। इस पे वापस जाएंगे, एक एग्जांपल अभी कर लो इसमें। 67384 इंटू 99 करो। हाँ, करेक्ट, ये वाला 6738499। So 9, so just 8, 4. So the slide is multiplication by 5. Yeah. So 8316, then 673. So 673 subtract 673. बस ये ध्यान रखना, उस सब्ट्रैक्शन में 16 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो तो अलग रहेगा। 3 minus 3 is 0, 8 minus 7 1, 13 minus 6 7, this is 6 6. So 6671016. Is it clear now? 6671016. So this is about multiple. चलो एक एग्जांपल और करो, take one more example. 8532746 into 999. So this way you can keep on increasing the difficulty level. So 1 2 3. So 1 2 3 7 4 5. 9 minus 7 2, 9 minus 4 5, 9 minus 5 4. This is done. Then 8532, oh 3. So 8532 and 8532. Make sure that you don't touch 254. Subtract. So 254, there is no problem. Then 5 minus 2 is 3, 4 minus 3 is 1, 7 minus 5 is 2, 12 minus 8 is 4. Then this is 2 and this is 85. So 85242 So I think now you can see that everything is done. Now tell me if there is any problem, any doubt. Sure. Now, couple of small and interesting things. Multiplication by 5. How do you do 384 multiplied by 5? Take a deep breath and let's do this. It's very interesting, I'll tell you. Multiply by 5 करने के लिए forget 5, इसको भूल जाओ. Put a 0 in the end and divide by 2. Put a 0 in the end and divide by 2. So it will be 1920. So the answer is 1920. So if you have to multiply something by 5, क्या करना है? Put a 0 in the end and divide by 2. Put a 0 in the end and divide by 2. Whenever you have to multiply something by 5, just put a 0 in the end and divide by 2. Suppose if I have 67 into 5, करो जरा, 67 into 5.
Yes, Irwan. So put a 0, divide by 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 10, 2 पंचे 10. That is the answer. ये कोई जादू नहीं है. This is not a miracle. We must know 5 itself is 10 by 2, no? इसलिए ऐसा हो रहा है. It's not a magic, but you can do this mentally. For example, 673 multiply by 5. करो जरा, can we do it mentally? Without writing anything else, can I directly write the answer? सोचो जरा. 2 3s are 2 3s are 1 13, 2 छक 12, 10 5. ऐसा हो सकता है? So we are using actually table of 5. Does everyone see that? Now just to show, क्या किया हमने? यहाँ पे हमने 0 डाल दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, इसको हटा दिया. ये किया ना हमने? Let's take another one. 2 5 4 8 multiply by 5. करो जरा. 2 by 4 8 multiply by 5. So 2 से सीधे डिवाइड करना शुरू कर सकते हैं क्या? 2 1s are, then 5, 2 2s are, 14 7s are, then 4 and then 0. Do you see this? Is it happening? Is there anyone who is facing any trouble in this? 6 4 9 into 5. Sir, I can't hear you. अच्छा बेटा, आई एम सो सॉरी. एक बार एक काम करो. नहीं नहीं, दैट डजंट मैटर. ऑड में भी हुआ, इवन में भी हुआ, आंसर तो सही सब में आएगा. या कैन यू डू वन थिंग? एक बार अपना डिवाइस लॉग आउट करके लॉग इन करो. जस्ट वो विंडो क्लोज करके दोबारा आ जाओ बस. आई विल वेट. जिसको भी मेरी आवाज नहीं आ रही है, जस्ट एक बार बाहर जाके अंदर आओ. एंड प्लीज कंफर्म इफ माय वॉइस इज क्लियर नाउ. बाहर जाके अंदर आ जाओ बस. यस? या नहीं, डॉलर आयुष 0 2 बार नहीं आएगा ना. एक ही बार 0 डालना है एंड डिवाइड बाय 2 करना है. सो 2 से डिवाइड किया, 3 2 4 5. दैट्स इट. यस, डॉलर 2 बार 0 नहीं आएगा. अच्छा, अगर इवन नंबर होगा ना तो 0 बाद में दिखेगा, ऑड नंबर होगा तो 0 बाद में नहीं दिखेगा. दैट्स इट. ओके, वंस अगेन मैं दोबारा से बताता हूं बेसिक से फॉर माय सेटिस्फैक्शन. 779 multiply by 5. So forget this 5. Listen very carefully. Forget this 5. Put a 0 here. Divide by 2. If you can do this mentally, great. चलो divide by 2. So 2 तिया 6, 17, 2 8 16, 19, 2 9 18, 10, 2 पंचे 10. Normal division 3895. The challenge is, can you do it without writing this 0, without writing this 2? That's your choice. 8337 multiply by 5. Can we try to do this mentally? Assume करें कि यहाँ पे 0 है. 2 6 12, 2 7 into 8 is 16. Just assume that a 0 is here. Divide by 2. मन में divide कर सकते हैं ना. 2 4s are 8. 2 1s are, then 13, 2 6s are 12, 17, 2 8s are 16, and 1 and imaginary 0 है ना 5. 4 1 6 8 5. राइट? जिनसे नहीं हो रहा है वो 0 लिख के कर लो, बट कोशिश करो कि 0 लिखने की जरूरत ना रहे. ओके, लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स. If I give you some more examples like this, 3579 multiply by 5.
3579 मल्टीप्लाई बाय 5. चलो एक बार फिर से देख लो. We put a 0 here and we divide by 2. 2 under 2, 2 to the 4, 2 7 the 14, 1 to 8 the 16, 1 to 9 the 18. Put a 0 in the end and divide by 5. Divide by 2, sorry. So 2 ones are 2, 15, 2 sevens are 14, 17, 2 eights are 16, 19, 2 nines are 18, 10, 2 fives are 10. So 17895. ठीक है. सम्यक आई थिंक टाइपिंग में प्रॉब्लम हो रहा है. All right, everyone, is it complete? Is it clear now? 2743 multiply by 5. 2 under 2, 2 3 the 6, 2 7 the 14. Who is this? Abhirup, can you just mute yourself? Yeah, 2743 multiply by 5. So put a 0 here, divide by 2. So 2 1 2 3s are 6, 14, 2 7s are 14, 2 1s are 10, 2 5s are. ठीक है. See, when it is even number, it is very easy. When it is even number, it is really easy, है ना? If I give you an even number, 7968 multiply by 5. It looks really nice. Put a 0, divide by 2. So 2 से divide करो. 2 3s are 6, 19, 2 9s are 18, 2 8s are 16, 2 4s are. See, even number होगा तो end में 0 आएगा, odd number होगा तो end में 5 आएगा. सीधी सी बात है. Okay. So this was multiplication by 5. Similarly, multiplication by 25. I'll show you. 78 into 25. Listen very carefully. Put 0 0 in the end and divide by 4. 4. Put 0 0 in the end and divide by 4. ठीक है. So 0 0 and divide by 4. Forget this 25. 4 से divide करो. So basically we have to use only table of 4 to be used. See, जब 5 था तो सिर्फ एक 0 डालते थे. 25 है तो 2 0 डालेंगे. अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. अभी रुक, कोई बात नहीं. No problem. चलो अभी करते हैं. When it is 5, put 1 0. When it is 25, put 2 zeros and so on. So divide by 4. 4 1s are 4, 38. 4 9s are 36, 20. 4 5s are 20, 0. So 1950. All right. Suppose we have 4 6 2 multiply by 25. 4 6 2 multiply by 25. So 0 0 divide by 4. So 1 1 3 0 0. अरे वाह. No, sorry, गलत हुआ. It's wrong. It's wrong. It is wrong. दोबारा. 4 1s are 4. 4 1s are so 22. 4 5s are 20. 20. 4 5s are 20.
11550. नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. 11550. Right? Let's take more examples. 357 multiplied by 25. Three, 5, 7 into 25. So 0, 0 divided by 4. Normal 4 8s are 32, 37, 4 9s are 36, 10, 4 2s are 8, 20, 4 5s are. So 8925. Right? 6735 multiply by 25. 6735 multiply by 25. Around 20, 15 minutes more. 15 minutes more. So 25. So 0, 0 divided by 4. So 4, 1, 27, 4 6 are 24, 33, 4 8s are 32, 15, 4 3s are 12, 30, 4 7s are 28, 20, 4 5s are. Yes, I hope everyone is clear about this. Anushmita, please check your calculation. ठीक है? 35798 multiply by 25. 112233 multiply by 25. Sir, can you show the question, please? Yeah, sure. Okay, so put 0, 0, divide by 4. This is cancelled. So if you divide by 4, 4 8s are 32, 37, 4 9s are 36, 19, 4 4s are 16, 38, 4 9s are 36, 20, 4 5s are 20, and 0, 25. So 0, 0 divided by 4. So 4, 11, 4 2s are 8, 32, 4 8s are 32, 0, 2, 0, 23, 4 5s are 20, 33, 4 8s are 32, 10, 4 2s are 8, 20, 4 5s are 20, 2805, 825.
825, right Rishit? 825. ओके चलो अब आ जाओ डिवीजन बाय 5. इफ आई हैव 6 3 4 6 बाय 5 क्या करोगे? जब मल्टीप्लाई बाय 5 था तो हमने क्या किया था? x 0 करके डिवाइड बाय 2 ऐसा किया था ना, राइट? इसमें क्या होगा, नीचे 10 रख के ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 10 रख के ऊपर 2 आएगा. When you have to divide by 5, नीचे 10 रख के ऊपर 2 आएगा. तो अब की बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो. So 2 6 12, 2 4 8 and 1 9. उल्टा, बेसिकली उल्टा. 2 3 6 and then divide by 10, so 69.2. दोबारा से देखो, 2 4 7 8 डिवाइड बाय 5 करना है तो क्या करोगे? लिसन वेरी केयरफुली. In place of 5, take 10 in the denominator and multiply by 2 in the numerator. ठीक है? So 2 8s are 16, 2 7s are 14 and 1 carry forward 15, 2 4s are 8 and 1 9, 2 2s are 4 and divide by 10 है so 0.6. Make sense everyone? अच्छा इसको और छोटा कर देते हैं. Let's make it further smaller. और छोटा करते हैं. Suppose we have 6 4 8 7 multiply by divide by 5. ऐसा करना है ना? ऐसा करना है तो एक काम करो. Listen very carefully. If it is 5 here, तो एक डिजिट के पहले डेसिमल डाल दो और into 2 कर दो. अभी चलेगा? एक डिजिट के पहले डेसिमल डाल दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो. Fine. 2 7s are 14, 1 carry, 2 8s are 16 and 1 17, 1 2 4s are 8 and 1 9, 1297.4. कौन गाना गा रहा है? चलो वन मोर. 9876 डिवाइड बाय 5. divide by 5. So because it is divide by 5, so multiply by 2 and इसको हटा के यहाँ पे डेसिमल डाल. एक के ही पहले डेसिमल डालना बस. Just take one digit, right? So it will become 2 6 are 12, 2 7s are 14 and 1 15, 2 8s are 16 and 1 17, 2 9s 18 and 1 19, 1975.2. 19. Anushmita 1975. Sorry, sir. Sorry. 75. Avirup 75. Okay. What if we have 374860 by 5? So यहाँ पे डेसिमल एंड देन इनटू 2. तो 0 है तो 0 का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, वो गायब हो जाएगा, है ना? 0 का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा, वो वहां से गायब हो जाएगा. सो इनटू 2. सो 2 6 are 12, 2 8s are 16 and 1 17, 8 and 1 9, 2 7s are 14, 6 7. So 7497. Does everyone understand that? अगर 0 है तो वहां पे डेसिमल डालने का क्या मतलब? वो वहां से गायब हो जाएगा, है ना? That's the idea, right? I'll give you one more number in this. 11270 divided by 5. So decimal into 2. तो basically 0 गायब हो गया. So it is 2254. Make sense?
Sure. Now division by 25. Chalo, let's see. 6488 divide by 25. You already know the method. Tell me what should we do? Tell me what should we do? When it was 5, we were putting a decimal after one digit. When it is 25, we'll put a decimal after two digits. यहाँ पे decimal डाल दो. And then into what? Yes, क्या बात है? Yes, into 4 by 100, right? So मैं लिखता नहीं हूँ. लिखने से वो क्या होता है? That it becomes a little more complicated. So I will not write. We'll just use it. Okay, so put a decimal before two digits and multiply by 4. For 25, चलो एक बार लिख ही देता हूं ताकि गड़बड़ ना हो. Divide by 100 and multiply by 4. और उसको छोटा कैसे करेंगे? Put decimal before two digits and multiply by 4. So 4 into 8, 32. 4 into 8, 32 and 3, 35. 4 4s are 16 and 3, 19. 1, 24 and 1, 25. So 259.5. 100 by 4. 25 है ना? 6488 divide by 25. So in place of 25, take 100 and take 4 here. Because 4 by 100 will be 1 by 25, right, Suhani? 100 is what? 25 into 4, na? There is another way to understand this. Okay, let me explain in another way. If we have 76 by 25, listen very carefully, everyone. Multiply and divide by 4, 4. Do you know this? Does everyone understand this, that we can do this? So what will happen? It will be 76 into 4 divided by 100. दिखा सबको? And then जो भी करना है वो कर दो. So 4 6 are 24, 4 7 are 28 and 3 so 30. So divide by 100, so 3.04. I hope this is absolutely clear now. है ना? Let's take one more example. 3 4 5 9 divide by 25. So honey, I hope it is clear now. So now can we follow a shorter way? Put a decimal before two digits and multiply by 4. सिंपल है ना? जब 5 था तो 2 से मल्टीप्लाई करते थे. 25 अगर होगा तो 4 से करेंगे. So it is 4 9s are 6, 36 6 3, 23 2, 16 and 2 18, 1 12 and 1 13. So 138.36. 138.36. ठीक है? Suppose we have one more. 1174,580 divide by 25. Now do this. Suhani, did you get it? So remove this, put the decimal here, multiply by 4. So ये 0 का तो कोई मतलब है ही नहीं. 4 8s are 32, 3 4 5s are 23, so 3 2, 16 and 2 18, 1 28 and 1 29, 2 4 1s are 4 and 2 6 4. So 46983.2. Okay. Oh, if we have 74675 divided by 25.
अभी करो। Remove this decimal into 4. 4 5s are 20, 0. 4 7s are 28 and 2 30, 0. 3, 24 and 3, 27. 2, 16 and 2, 18. 1, 28 and 1, 29. So 2987. Right, so this was the last part of the session. Now, if you have any trouble, you can tell me now. I am going to, you can unmute yourself now. You can unmute yourself now. And No doubt, sir. good. You can start your camera now. You can Sir. start your camera now so that I can see you. Good explanation. So we are done with this small session. Couple of things that I want you to understand. Whatever methods you learn, आप चाहे कितने भी मेथड सीख लें, लेकिन जब तक आप उनको रिवाइज नहीं करेंगे, unless you repeat them properly, it will not be really helpful, right? So by the design of a 6 hours program, whatever we had planned or whatever can be done in 6 hours, उससे हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही किया, ठीक है? The whole agenda was to make sure that everybody understands the processes so that you can repeat it on your own also. मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप इन मेथड्स को अपनी लाइफ में आगे इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है? Irfan, I'll inform whenever we do the next thing. Okay. If you really wish to use them, then make sure that you repeat them on your own also. Now, one thing that I'm going to do is, I'm going to do one more thing. Listen carefully. The recorded sessions of these 6 classes, I'll put it on YouTube for a certain duration. I'll put it on Wednesday, Thursday. Next Thursday को मेरे पास videos आ जाएंगे process होके. I will put it on YouTube. If anyone wants to repeat, ठीक है? लेकिन थर्सडे भी इसलिए तब तक आप अपने आप जो ट्राई कर सकते हो वो कर लो, ठीक है? एंड समबडी वांट्स टू रिवाइज, गो थ्रू द सेशंस अगेन. सो जो भी हमारे सेशंस हुए हैं उनका जो रिकॉर्डिंग होगा मैं वो यूट्यूब पे डाल के आपको इन्फॉर्म करूंगा, तो आप सभी लोग जो एनरोल्ड थे वो उसको देख पाएंगे, ठीक है? 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए. सर चैनल का नाम क्या है? I'll inform it. वो बना के I'll create the channel, I'll upload the videos and I'll inform. I have the information of all you people. I have email and number of everybody. I'll inform everyone. ठीक है? Okay, sir. So this is where I have completed my program. If you have any feedback, if you want to say anything about me, about the program, you can give your feedback now. आप में से जो भी बोलना चाहे कुछ भी प्रोग्राम के बारे में, हम और क्या कर सकते हैं, आपको क्या अच्छा लगा बुरा लगा बता सकते हो. कैमरा चालू कर सकते हो. ऋषित, जगजीत, सम्यक, यू कैन स्टार्ट योर कैमरा. अभिरूप, अरसलान, यू कैन स्टार्ट योर कैमरा. एंड एनीवन वांट्स टू गिव एनी फीडबैक? let's start with Ankit, you want to say something? You can go ahead. चलो, Ankit डर गया. Avesta, you can say, you want to say anything, you can go ahead. The session was amazing and I learned very much, and now I could perform very fast the calculations Good. Just which make sure I was not able to perform. Good. Always remember the key is repetition. Repetition is the key. Yes. Dollar. मैम, यू वांट टू से समथिंग? आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, हाँ, आपका कैलकुलेशन का मेथड जो था वो बहुत सिंपल और अच्छा है, और आपने बहुत अच्छी ढंग से सिखाया है और याद रह जाए ऐसा है, तो कैलकुलेशन करने में बहुत जल्दी हो जाता है. जस्ट लाइक मैंने लिखा ना, वो 9 का कैलकुलेशन तो शकुंतला देवी की स्पीड से हो सब जाता था. मैं यही कोशिश करता हूँ कि देखिए क्या होता है, मैं सब लोगों के लिए एक बात कहना चाहूंगा. कई बार इस तरह के मैं देखता हूँ ना, इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं
जो फैंसी चीजों के बारे में बात करते हैं वैदिक मैथ्स में ही। अभी इरबान बोल रहा था कि बड़ी चीजें कब करेंगे, मोस्टली बड़ी चीजें नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी बड़ी चीजें हम करते हैं ना उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं हम। इस्तेमाल आप ध्यान से देखना, ईच वन ऑफ यू वुड बी एबल टू यूज ओनली दोज मेथड्स इन योर एग्जाम्स which are shorter, which are easier. You will never be able to use the larger methods in the exam. larger वो नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि एक तो वो सही समय पे याद नहीं आता, ठीक है, और अगर आता भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसको उसको इस्तेमाल करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। यही वजह है कि मैं बहुत सारे बड़े फंडों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। जो संस्कृत में लिखा गया था उसका जो अनुवाद है और उसका जो इंटरप्रिटेशन है, इस्तेमाल कैसे किया जाए वो मैं उस हिसाब से ही बताने की कोशिश करता हूँ। सो थैंक यू सो मच। ऋषित, sorry, Uday, you want to say something? Go ahead, you can go ahead and say. Good evening, sir. Yes, you can start your camera and speak. Okay. Good evening, sir. Good evening, good evening. बोलिए। मुझे बहुत अच्छा लगा सेशन सर। मेरी कैलकुलेशन अब ज्यादा फास्ट हो जाएगी पहले से। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो आप सब लोग अपने दोस्तों को बताइएगा। हर वीक, आई मीन एवरी 15 days आई एम गोइंग टू डू सच प्रोग्राम्स आइदर इन वैदिक मैथ्स और इन समथिंग एल्स। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम मैं करता रहूंगा अभी, ठीक है। तो आप लोग अपने दोस्तों को बताते रहिए। मेरे फेसबुक पेज आएगा आपके। I want to say something. हाँ, जब भी करेंगे अनाउंस करेंगे and you can spread the word. Yes, आयुष, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर जहाँ जैसे कि पहले तो मैं मैथ्स करता था, प्रैक्टिस करता था, एग्जाम देता था, उसमें बहुत हार्ड वर्क लगता था। पर ये वैदिक मैथ्स का मैंने कोर्स किया तो अब जहाँ तक मेरे को लगता है मेरे को ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, मुझे टाइम बहुत बचेगा सर। इट्स वेरी बेनिफिशियल। और सर ये बात आपने सही कहा कि हम लोग को प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग कुछ समय के लिए याद रखेंगे फिर बाद में भूल जाएंगे, और मे भी ऐसा हो सकता है कि हम लोग 1-2 साल बाद हम लोग याद भी ना रहे वो सब। तो हम लोग को रेगुलरली हर 1-2 हफ्ते के अंदर सब रिवाइज करते ही रहना पड़ेगा। हाँ, ये अगले 2-3 हफ्ते में ज्यादा रिवाइज करना। इन द नेक्स्ट 2-3 वीक्स यू नीड टू रिवाइज मोर। उसके बाद थोड़ा गैप भी होगा ना तो नहीं भूलोगे। अगले 3-4 हफ्तों में अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगे एक्चुअली रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो नेचुरली आपको आएगा। जैसे टेबल याद हो जाते हैं ना, टेबल कैसे याद हो जाते हैं, पहाड़े कैसे याद हो जाते हैं, वैसे हो जाएगा, ठीक है। सो अगले 3-4 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज्यादा हर हफ्ते में 2 बार ऐसा करना है पूरी चीजों को, ठीक है। यस, थैंक यू आयुष। इरबान, यू वांट टू से समथिंग? Thank you, Shubham. Thank you. Sir, it was very nice and good session, sir. We have learned many things, sir. और इससे कैलकुलेशन स्पीड भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा सर। चलो, बहुत अच्छा। Shubham, yes, I read your message. You want to say something? Anusmita, I have read your message. You want to say something? Go ahead. Yes, Shubham. Yes, sir. We enjoy a lot, sir, and it's amazing class. Thank you, sir, for giving us time. Thank you a lot. Thank you. See you again. Yes, sir. We had enjoyed a lot and even learned many things. I think I'll improve in maths and I'll be scoring better marks in my upcoming exams. I want to say that only. Very nice, and all the best to you, bache. If you have in future also, all of you have my contact email ID and mobile number, right? You can always send me a message whenever you have any trouble in academics. Okay? Yes. Anyone else wants to say something? Samyak, Shayantan, Akshar, क्या है? Akshar, you want to say something? Yes, Irban, chalo, bolo. Last question. Irban, go ahead. Tell me your question. Thank you, Shantan. Chat, sir. Yes. I am the elder one. He is the younger one. Chalo. So, all the best. God bless you all. Take care. Do very well in your life. Yeah.
Thank you so much. Thank you so much. See you again. Take care. Yeah, I'll see you again very soon. Thank you. Thank you, everyone.